ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ବହିର ଦି କନକ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଫିଲିଂ ଦି ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ବହି ଭିତରୁ ହେଲା ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆଣିକି ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ କରି ଦେଇଛି, ଦି ପୋଏମ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ମିଷ୍ଟର ଜୋନ୍ସ ଦି ସ୍ପିକର ହେଲା ସ୍ପିକର୍ସ ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍, ଏଇଟା ଆମ ନେବର ହୁ ହାଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ filled with ଏଟା କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ହେବ। ହର ଗାର୍ଡେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଏ peculiar path, a pond and a rockery along with an unusual ଏଟା ହେଲା ଆମର sundial that she finds charming. Mrs. John plants tiny delicate plants between the stones which the speaker thinks must be so small that they are planted with a pin. One day Mrs. Jones invited the speaker to see her garden and they discuss a flower that Mrs. Jones treasures. When the speaker asks where a lovely flower is, Mrs. Jones says that the speaker has been standing on it all along. तापरे डबल आई क्वेश्चन देइची हैला फिल इन द ब्लैंक्स द टोन ऑफ द पोएम इज डैश हैला पोएम रो टोनटा कोन थिला पिला माने पोएम रो टोनटा थिला हमर डबल आई आई भी आउ भीटा ह्यूमरस अम्यूजिंग एंड लाइट हार्टेड हैला तीनटा को थिला बुझेला ए ऑप्शन डी टा हबा हमर करेक्ट आंसर। 2 नंबर प्रश्न द स्पीकर इन द पोएम इज द पोएट। तापर नेक्स्ट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज देखियो पिला माने डाहण पटे जहा थिबो ता तळे ता थिबो पुणी पुणी एमिति एमिति है कि ए ए बी बी सी सी थिबो हैला आईटा होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमरो हैला कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स बुझेला ब्रैकेट जो ई दिटा देछि ताको करेक्ट आंसर हम लिखिबा। द पोएट यूजेस द वर्ड स्टोन्स in all stanzas in order to emphasize her dash, in order to emphasize obsession with a stony garden. Next 2 number amara the poet uses imagery to describe the features of the garden that help readers visualize the garden's peculiar nature. B re a refrain is a repeated line or phrase that appears in each stanza. Identify the refrain from the poem. कह माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स बुझेला ये मुझे बुझौनी कारण विषय भितर मुझे भलरे कम्प्लीटली बुझे देछि तमे एठी कर क्वेश्चन कर। नेक्स्ट बीआई रे हमकु देछि आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट एम्फसाइजेस द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। It often involves a situation where the outcome is the opposite of what is expected, creating a surprise or a humorous effect. For example, Mrs. Jones' excitement about her garden contrasts with the speaker's disappointment on how ordinary it is. Identify the line from the poem that displays dictionary irony. Hela eta ko line अछि has got a garden full of stones, puts little plants between the stones. I cannot think how she gets them in unless she plants them with a pin. Next amara complete the following sentences appropriately. The word concrete can refer to dash in Mrs. Jones' garden, specific and tangible things. Next 2 number the title also has a symbolic meaning as the poem provides a clear or concrete example of Mrs. Jones dash gardening habit. सेटा हमरो पढिथिले पेकुलियर कोन पेकुलियर हला लिपि जाई छै एटा हमरो पेकुलियर पिला माने एठी हमकु देई छी हला आई रे तापरे रीड द गिवन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो एटा को पढि दबो हला तापरे आंसर करिवो। What can be inferred about Mrs. Jones' taste in gardening from the description of her garden being full of stones? A garden full of stones suggests a few things about Mrs. Jones. She prefers for low maintenance gardening. She desires to create a unique garden. She likes to use stones for creating paths and borders. She does not care what other people think about her. She does what she likes.
डबल आई आमर देछि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स द गार्डन सर्व्स एज ए मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जोन हरसेल्फ एटा कम एटा ट्रू हबा हमर ट्रिपल आई रे हमर व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ बाय क्रेजी पाथ द पोएट वांट्स टू टेल अबाउट द अनयूजुअल गार्डन ऑफ मिसेस जोन्स हर गार्डन वाज फुल ऑफ स्टोन्स एंड द स्टोन्स वेर fitted together randomly. There is no pattern used in making the path of the garden. Next question, what does the sundial with this strange device suggests about Mrs. Jones' personality? Option A टा correct answer है जीवो. She has a fascination with unusual items. Next question, how does Mrs. Jones feel about her garden? Mrs. Jones feels proud of her garden and she is very happy with it. She does not realize that her garden looks peculiar to other people and she does not care about it. The following line from the poem supports the answer. Support your answer which Mrs. Jones thinks rather nice. बुझेला 2 number, why do you think the speaker describes the plants as being so small that they could be planted with a pin? By saying this, the speaker is describing Mrs. Jones' garden in a humorous way. It is full of stones and there is a very less space for plants to grow. 3 number प्रश्न, what do we get to know about Mrs. Jones based on her gardening style and her interaction with the speaker? We get to know about Mrs. Jones that she feels proud of her garden and she has an attraction for unusual things. Her garden is full of stones with a very little space for plants, a sundial with a strange device. She does not care about other person's opinion but does what she likes to do. 4 number प्रश्न, the poem portrays Mrs. Jones in a positive light. Support this statement. The poem portrays Mrs. Jones as a confident and capable woman. She has a unique taste and she does what she likes without caring others opinion. बुझेला तो पूरा विश्व भितर हमको देछि से कहार ओपिनियन कहार मतामत नउ चाहुनथिला ताकू जहा भल लागुथिला से ताहा ही करूथिला. 5 number प्रश्न पिला माने, what does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? The poem tells us that different people have different opinions about the world around them. Mrs. Jones thinks her garden to be very pleasant, but the poet finds it strange. It is okay for Mrs. Jones that her garden is filled with stones and there is very little space for plants, but for the poet it is not normal. नेक्स्ट क्वेश्चन हमरा अप्रोप्रिएट वर्ड ब्रैकेट रे देछि ताको रिप्लेस करबा हमें ए संडाल विथ स्ट्रेंज डिवाइस कौन जो पेकुलियर डिवाइस. 2 नंबर, हु डैश व्हिच मिस नहीं हां हु इज मिसेस जोन्स थिंक रादर नाइस एटा प्लीजेंट. दे आर सो डेलिकेट हाउ फ्रैगाइल. 4 नंबर प्रश्न, वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड कौन एटा क्राइड शाउटेड. Next, the sundial is referred to as a device in the poem. Work in pairs to infer the meaning of device. Share your thoughts with your classmates and teachers. A device is a tool or machine used to do a task. Some examples of devices are mobile, computer, washing machine and a screwdriver. नेक्स्ट पिलाने आम मैचिंग करवा कलम 1 रु कलम 2 आ कलम 3 होची कलम 1 सहित तार अर्थ जोटा भी बुझाए. प्रथम देखिए 1 नंबर इम्प्लीमेंट. इम्प्लीमेंट कौन हो 1 नंबर पिला माने इम्प्लीमेंट ट्रिपल आई हो है 1 नंबर ये ट्रिपल आई हो. समथिंग दैट वर्क्स ऑन बीइंग मूव्स बाय हैंड है हाथ द्वारा जहाँ बुलाऊे छुरी नाइफ है छुरी बुलेले सेमती. तापर 2 नंबर देखिए टूल. टूल कौन हो 2 नंबर होमर भी बुझेला समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर माने हैमर है. तापर 3 नंबर देछि हम इक्विपमेंट. इक्विपमेंट कौन हो इक्विपमेंट हो हमर आईवी है 3 नंबर हो आईवी. ए सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज है पर्टिकुलर पर्पज क्रिकेट बैट हेलमेट बैटिंग सब दो है पूरा सेटटा. तापर 4 नंबर देछि हम एप्लायंस. एप्लायंस हो हमर है हम कलर चेंज कर दूची तुम जानिया पे. एप्लायंस हो हमर आई है समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इज यूज्ड टू डू वर्क इन दी हाउस है
हाउस रे ग्राइंडर कले मिक्सचर ग्राइंडर 5 नंबर गैडजेट गैडजेट हो समथिंग स्मॉल दैट इज मेकानिकल और इलेक्ट्रोनिक जमी मोबाइल फोन और लैपटॉप नेक्स्ट प्रश्न सेमती है आमको कलम 2 दे दीजिए कट इनटू स्मॉल पीसेस है डाइस सेमती ग्रेन दैट वी कुक राइस है प्लूराल ऑफ माउस माइस बैड हैबिट भाइस बुझीगला सेमती नेक्स्ट कलम सेमती हीट समथिंग है ताको बॉयल करिया फुटिबा वर्क भेरी हार्ड टॉयल लेंथ ऑफ वेयर इन ए सर्कल ताको कौन कहबा कॉइल सीड्स ऑफ रैप फूड आइटम्स है जो है फॉइल फॉइल रे फूड आइटम आम गुड़े रखुचे है संपूर्ण विषयटी सरीगला धन्यवाद पिला माने।